Hello guys, this is Vivan Karki और आज मेरे पास है some quick tips and techniques which will really help you in good singing. So before we get into the tips and techniques, you need to understand the difference between your head voice and your chest voice. So the chest voice is that deep resonant sound that you use for your everyday talking. जो मेरा voice अभी है, जो आप लोग सुन रहे हो, वो मेरा chest voice है. And head voice is up there, it's more light and it's more heady. और आज हम फोकस कर रहे हैं हेड वॉइस पे क्योंकि ये बहुत वीकर पॉइंट होता है सिंगर्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेस एक्सरसाइज. सो यू हैव टू से वी जस्ट लाइक यू आर अ किड ऑन अ स्लाइड. वी. सो नाउ यू हैव टू डू दैट यूजिंग योर चेस्ट वॉइस. वी. सो यू कैन हियर द डिफरेंस. द फर्स्ट वी इज योर हेड वॉइस. तो आज हम फोकस कर रहे हैं आपके हेड वॉइस पे. तो नाउ विल यूज योर हेड वॉइस एंड डू दिस एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज विल साउंड लाइक और एक बार सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू अ सॉन्ग. और आप भी अपना चॉइस का गाना सेलेक्ट कर सकते हो, पर याद रहना चाहिए आपके गाने में हेड वॉइस का कॉन्सेप्ट यूज किया हो. सो आई एम गोना गो विद टॉकिंग टू द मून बाय ब्रूनो मार्स. इट साउंड्स लाइक I'm talking to the moon. So you see, when you hit those high notes, you'll have to let your head voice shine. So that is what we are looking for in this video. So last and the most important tip ये है कि आप we एक नोट पे होल्ड कर सकते हो using your head voice. So example is we. ये आपको बहुत हेल्प करेगा सस्टेन और स्टैमिना में. And there you have it guys, those are the quick tips and techniques which will really help you to sing better. Don't forget to practice those exercises every day and sing in your head voice often. Share your progress with us and tag us. Until then, keep singing, keep practicing.